कोई ऐसे सेट पे भी चले जाते हो कि आप जहाँ पहले दिन दूसरे दिन ही आपको रोना आता है कि अभी 30 दिन और रहना है यहाँ पे। सभी तो जरूरी है ना। So 100%. It hits you later. It's like vodka. मैं एकदम टुक वाला खेलता हूँ। We drank a lot. We didn't prank. Every time 6-7 साल से ढोंग कर रहे हैं दुबले होने का और फिट होने का, ग्रीन टी पी रहे हैं। Hi guys, this is Maanvi Gagroo Hi, this is Sumeet Vyas. Hi guys, this is Amol Parashar and you're watching us on The Bollywood talk show. on IWMBuzz. भाई जब हम लोग त्रिमूर्ति की बात करते हैं तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट डिफरेंट पीपल डिफरेंट त्रिशक्ति, दैट इज व्हाट वी कॉल। बट अगर मॉडर्न डे त्रिमूर्ति कोई है तो सिर्फ 3 लोग हैं मेरे सामने, चंचल, चितवन और चंदन। इनके अलावा कोई है नहीं। दोस्तों, ट्रिपलिंग सीजन 3 इज हियर। गिव 1000 applause। सबसे पहले मुझे बताइए, this is the 3rd season, so of course 3x the excitement, 3x the double fun, 3x the धमाका and everything. But जो characters भी है आपके, वो भी अभी it's gonna be like different because पहले time पे when you are coming, you're just presenting the character and you're introducing your character. Yeah. 3rd season तक सबको पता है, everybody knows the nitty-gritties of it, but you are playing the same character. So what's different for you as an actor when you play the same character and it's coming with multiple seasons? Let's start with you, or maybe चलो let's start with him. चलो. What is different for me here? It's not different. I mean, at least the vibe between us is not different, and which is what we come back for. 3 साल बाद जब आते हैं तो हम नया नहीं ढूंढ रहे होते हैं, हम वही पुराना फील ढूंढ रहे होते हैं कि अरे विल गो एंड वर्क विद फ्रेंड्स एंड चिल विद फ्रेंड्स एंड साथ में काम भी कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत शूट भी हो ही जाएगा। बट दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बस पहुंचना है वहाँ पे और मस्ती करनी है, और बीच बीच में कोई आके बोलेगा कि प्लीज एक शॉट दे दो। हाँ, थोड़ा सा एक थोड़ा शूट कर दो। लिटरली ऐसा होता है बहुत बार कि हम बात कर रहे होते हैं ऐसे बैठे हुए और कोई आके बोलता है कि सर शॉट रेडी, हाँ चलो ओके एक्शन, और उसी में ही शॉट भी हो जाता है। हम जाते भी ऐसे हैं कि सपोज हम बात कर रहे हैं, यू कम टू कॉल अस, तो आई बी लाइक हाँ फिर ना मैं आप उसने ये बोला उसने करके ऐसे मतलब दिस इज कंटिन्यूइंग एंड यू गो जल्दी एक्शन कट एंड देन वापस हाँ तो फिर मेन स्टोरी है, मेन ये वही है, मेन सीन यहाँ पे चल रहा होता है। वो तो चलो ठीक है, अब आए हैं तो करना पड़ेगा। एक्चुअली वो ऑफ स्क्रीन है, वो बीटीएस है, वो ऑफ स्क्रीन है, ये ऑन स्क्रीन है। वो साइड, वो बी साइड है, वो बी स्टोरी है। Your perspective? I mean, yeah, same. I also do the show. I do the show because I love to hang with Amol, Maanvi, Kunal, Kumud, Shanaz. I really love them, and this is the only way I can get to hang with all of them and spend that much time with them. नहीं तो सब लोग एक पार्टी में साथ में आते नहीं है। आते नहीं पाते, सब busy बिजी हो रहते गए हैं, आप, सब busy busy है ना। Since the first season, you guys have grown immensely as actors, as performing Yeah. artists. So busy भी हो गए तो schedule भी permit नहीं होता। So I think this is the only way. अभी you can अवार्ड तो फंक्शन यही में जाना award पड़ता है। functions, but I वो am सब भी getting तो there. जरूरी है ना। So 100%. तो लालच देके आते हैं No, अपने। 100%. That is the most important thing. If that's there, then everything is sorted. But I want to know from your end, there's this, sibling. अभी भी जब real life family setup में भी होता है कि when there are 2 brothers out there, there's 1 girl, वो सबसे ज़्यादा pampered होता है in general as well. I want to know in your family as well, what's like the kind of pampering that you have been, born and brought up since childhood? I'm extremely pampered. I feel I'm the youngest in my आपको family. देखो पैम्पर वाला फीलिंग रहता है, this is one girl who should Entitled be वाली pampered. feeling नहीं मैं मतलब दोनों साइड से, my dad side, mom side, I'm the youngest, तो बहुत ही ज़्यादा like pampered हूँ, entitled हूँ, unfortunately. Why unfortunately? नहीं entitled वाला नहीं, unfortunately pamper का भी unfortunately ये है क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई और मैं अकेले रहने लगी, and it was very hard for me because I'm so used to having people around and so used to people doing things like my house is always a mess and I've always maintained that it's because I tell my mom that आपने कभी मुझे आदत ही नहीं डाली, सब because there was always somebody cleaning up after me. Helping you. Yeah, so I was like All her fault. मतलब माँ बाप डांटते तो बोलते हैं कि इतना क्यों डांटा, जब नहीं डांटते आपने डांटा क्यों नहीं मुझे। See, this is entitled behavior ना, हर बात पे parents like blaming anyone else but yourself. But हाँ तो मेरा वो like I keep saying also कि I think मैं चितवन हूँ अपनी family की, क्योंकि also went into acting which was something nobody had done and they were like पता नहीं क्या करती रहती है. In fact even when initially when we started doing like pictures or tripling, तो किसी को पता नहीं था ना कि क्या है ये. OTT was just booming at that moment. And हाँ, people didn't even know, like my family that side was like
क्या YouTube पे कहाँ आएगा, क्या है, पर कैसे देखना, ये सब उनको, तो उनको लगता है पता नहीं क्या कर रही है, कुछ कर रही है, खुश है, you know, so they would leave it at that. So yeah, I was probably still am that person in my family. Yeah, but you might be that person in your family in terms of like how they perceive you, but you know abhi jaake the OTT has grown, you know, everybody's talking about it. Yeah, now coming in movies as well. Yeah. So wo jo perception hai, reaction hai towards you, wo kaise badla? वो बदला with pictures and tripling only, because my mom is a teacher, तो उनके a lot of her students would come up to her and say, जब मानवी आएगी तो आप प्लीज हमें मिलवाना ना उनसे, सेल्फी करनी, या ये करना है, अब वो she's really, when is she coming, when is this season coming, when is that season coming, so then my parents were like, अरे यार, hey, there's something here, you know, कुछ तो है, then people would like, कुछ फायदा हुआ pampering, कुछ फायदा हुआ pampering का, बॉम्बे जाने का. फिर मैं बाहर जाते थे उनके साथ, तो ऐसे सेल्फी लेने आते थे, so then they were happy. Girl has become फिर तो वैसा हो गया कि mom dad would be like, मैं ले लेती हूँ ना फोटो, मतलब we will take that's a proud for you. moment for them as well. Yeah, of course. सर आपका एक डायलॉग है, इट्स एक्चुअली बीन रिंगिंग इन माय ईयर्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कि सुबह डिवोर्स हुआ, शाम को डेट पे निकल गए गॉगल्स पहन के, ठीक है, तो दिस इज लाइक सिंबलाइजिंग कि बहुत क्विकली, जल्दी, आपने भी गॉगल्स पहने हैं अभी, बट क्विकली सिंबलाइजिंग द फैक्ट दैट क्विकली मूव ऑन, ये आज के जमाने में बहुत इजीली होता है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग कि अगर यू नो इफ समबडी हैज टू मूव ऑन, डू यू थिंक दैट इज द राइट थिंग? या जस्टिफाई भी कर दो थोड़ा प्लीज, ऑडियंस में समझेंगे. No, I think it hits you later. It's like vodka. You know, when you're drinking, you don't realize. So when it happens to you, you feel like, I moved on or whatever, and then you move on, and then like 3 days later, you see something or you hear something, or you don't hear someone, and then suddenly you're like, oh shit, what did I just do? क्या हुआ मेरे साथ? That's my observation of it. I don't think I've quite come to a take on it. Maybe at like 70 I will come. I'll give you a take. But I want to know his perspective. आपको क्या लगता है कि in terms of moving on and breaking up and all, वो चाहे रिश्ता, you know, relationship हो, divorce हो, whatever, girls ज़्यादा जल्दी move on करती है या फिर guys? I was just, when he was saying, I had a sorry. I think मैंने मेरे observation of life में जितनी छोटी सी जिंदगी जी है, वो mixed है. It depends on the person. I think it doesn't depend on the gender as much as the person. Because मैंने दोनों तरह के full on Rahul Dravid vibes with your answer. मैं एकदम टुक वाला खेलता हूँ. सडनली आगे बढ़ के एक बॉल पे छक्के नहीं मारने. Yeah, but in terms of the bonding as well, like you guys mentioned, you know, it's just about going out there, spending time with each other, and then थोड़ा बहुत shoot कर लेते हैं आगे जाके. But I mean that's what it should. That's what I think it's with everybody, you know, when you're coming with multiple seasons वगैरह. But at the same time, being the performing artist that you are, you know that हाँ ठीक है, audience is also expecting something. So वो balance कैसे होता है in terms of, you know, going out there, the individual Sumeet Vyas, Amol or Maanvi going out there to have fun, and at the same time the actors who want to deliver something good and enriching for the audience. So balance कैसे बनता है? I mean, it's also like नहीं, और जब हम बोल रहे हैं फन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काम कर ही नहीं रहे हैं. हम भी कर रहे हैं. मतलब एक मिनिमम तो है ही, आता है अपने को काम. वो भी है. And also what happens in theatre is that you do the same play for many years, but you keep growing. You play the same character, it's the same scene. In fact, it's more limited, the same set, but the performance changes as you experience more life. You know, you bring that much more value to your character. And same is with series and multiple seasons, that you are essentially playing the same character. The core is the same, but there is some value addition. Yes, right. जितने थपेड़े आप खाते हो लाइफ में, that adds a little more value to your performance, I think. You know, whenever there's an ensemble cast, there's always this, you know, ऐसा perception होता है, बोलते भी है कि, you know, either या तो 2-3 लोग gang up करके किसी एक को फंसाते हैं, and they kind of pull up all sorts of pranks. Why do I get this feeling that Maanvi might be the girl in this group जिसके ऊपर सब pranks होते हैं? No. नहीं. Then किसके ऊपर होता है? कोई ऐसा रिस्क लेगा नहीं होगा. कोई प्रैंक यहाँ गलती से ऊपर नीचे कहीं उल्टा सीधा पड़ गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. I think pranks जो है ना, वो बहुत successful actors जो होते हैं ना वो करते हैं. Stars वगैरह होते हैं. Movie stars. और मुझे ये भी लगता है कि प्रैंक को प्रैंक तभी बोला जाना चाहिए जब आप Equals. जब सामने वाला भी आप पे प्रैंक कर पाए. Otherwise it's just bullying. बहुत बार क्या लगता है कि आपने तो प्रैंक कर दिया, बट क्या वो प्रैंक कर सकता है आपके साथ अगले दिन? तो वो प्रैंक नहीं है शायद. That equation and bonding. हाँ, that equation is not pranking then. Then that is like कि ऐसे आप सीनियर जूनियर के मजे लेके चला गया. हाँ, like if you're वो ragging, bullying, या अपने स्टाफ में किसी के साथ आपने जबरदस्ती कुछ कर दिया, whatever, that all that is like. Yeah. We drank a lot. We didn't prank a lot. Prank नहीं drank. That's the keyword. A lot of coconut water.
ये पार्ट मैं कट कर दूंगा, वो सिर्फ रैंक तक ही रखूंगा, ये वाला पार्ट हटा देंगे हम लोग। नो ग्रीन टी, ग्रीन टी, हर्बल टी। Just हम लोग Every time 6-7 साल से ढोंग कर रहे हैं दुबले होने का और फिट होने का, ग्रीन टी पी रहे हैं। जैसे ही कोई आता है तो अचानक से सलाद और फल खाना, एंड देयर इज नो डेवलपमेंट इन एनीबॉडीज बॉडी। ये उतना ही दुबला है 7 साल से और हम दोनों वैसे ही रिस्ट में, कुछ नहीं हो रहा। नहीं बट करो भी मत, जो है वही सही चल रहा है तो क्यों करना है ना। बात सही है। मुझे शुरू में लोगों ने बोला बॉडी बनाओ, मैं टेंशन में रहता था कि शायद बॉडी नहीं बनी तो कुछ होगा नहीं, हो गया, होश आ गया, बहुत कुछ हो गया। चल सा गया। उस मार्केट में बहुत भीड़ है। हाँ, हमने नई दुकान खोल ली। नई अलग दुकान चल खोल रहा ली, है। and बहुत कुछ है बन गया। हाँ। इररिस्पेक्टिव विदाउट वर्ड, देखो अभी ऐसे शर्ट वर्ट भी एकदम फुल ऑन उतर भी रहा है। I have some questions. It's called Who's Most Likely to segment आप तीनों के साथ। I'm देखो pretty sure you कौन guys- सबसे ज्यादा कम नहाता है वो हम नहीं नहीं बताएंगे, ये मैं नहीं पूछने क्योंकि वाला ये हम हर जगह जाके बता रहे हैं और झूठा आंसर दे रहे हैं। क्यों ये क्वेश्चन कैसे एक्साइटिंग बना इस सवाल, क्योंकि हम रोज आते हैं। मेरे और पास फिर फिर ये जबरदस्ती सवाल देने के नहीं लिए है। मैं आ जाता हूँ। कुछ और है। अच्छा अब बेसिकली मतलब ऐसे सवालों का जवाब फिर जो हो जाता है कि चलो चितवन को दे देते हैं, मैं भी ले लेता हूँ कि ठीक है मैं नहीं नहाता। बट चलो एकदम मेरे पास बहुत इनोसेंट सवाल है। एक तो थोड़े वाइल्ड है बट अदरवाइज इट्स इनोसेंट। चलो, who's most likely to fall asleep while watching a movie? Because I have seen Sumeet fallen asleep ऐसे सेट पे बैठ के between shots and ऐसे, और वो सो रहे होते हैं, वो actually सो रहे होते हैं। You should take a BTS moment and put it on your Instagram story. Thinking about the next scene। वो अलग बनेगा। मेरे पास है Thinking फोटो, about next season Yeah. या फिर sleeping on set, there's different options. Yeah, Let the अच्छा, audience आप select. quiz करेंगे। फोटो है मेरे पास। I've just given him the option and idea. Okay. ये थोड़ा वाइल्ड है। Who's most likely to get arrested for doing something illegal? Touch wood कभी ना हो, but ये भी बहुत पूछा जाता है फॉर सम रीजन, और हम हमेशा बोलते हैं कि हम सब कोई ऐसा काम बहुत करते ही ज्यादा नहीं। शरीफ है, बहुत ज्यादा। Genuinely? मतलब बहुत। Yeah. नहीं वो गुड बॉय गुड गर्ल वाला वाइब आता भी है, बट कोई भी नटखट अगर कुछ भी हो तो जाएंगे तो तीनों जाएंगे क्योंकि हम करेंगे ट्रिपलिंग। Okay, who's most likely to offend someone by making a dark joke? I think Nice. all three of us are All capable three of us in are different ways, I yeah. think है। capable and probably we have done Yeah, it. I have done it. I have done it. Yeah. Guilty in a happy way. Yeah. That is By what evening only we Somebody, हम दोनों एक आध कोई वो आ जाएगा, वो फिर लेट रियलाइजेशन होगा। Okay, who's the laziest आप तीनों में से? I thought I was, then I saw Amol and I was like Baba is है, वो मेरे में भी क्या है। चीज की वजह से परसेप्शन बदला कि हाँ Amol is the laziest? What was he sleeping? no not sleepy or anything. I mean he's always on time. He's actually the most punctual person around, but no The hiccup. He's as punctual as me. चलो yeah Or I okay am as punctual. शेयर कर लो अवार्ड। ये लोग दोनों बहुत No, he's not punctual. ये वो tricky है थोड़ा। तो no but I think he can genuinely be by himself, chill on his own, like he doesn't feel the But need to that's like not laziness. हाँ. That's not laziness. Because I genuinely don't feel Amol is lazy. Do you feel you are lazy? He might be he might want downtime and all, which is I think what he's हाँ, but वो अलग- calling. But he's उसका वो lazy वाला नहीं है. Let me put it this way, आप तीनों में से कोई lazy नहीं हो, सब लोग बहुत मेहनत करते नहीं, हैं, I सब think लोग हम बहुत सब मेहनत करके अलग आगे अलग आए। तरीकों से lazy हैं. मैं दिमाग में मेहनत मैं तो करता बहुत हूँ। lazy हूँ. kinds of lazy. Yeah. Different kinds of lazy. Okay, I'm learning more on that. Who's most likely to talk to animals? Me. Yeah, Kunal Roy Kapoor also actually. Okay, who's most likely to put efforts into dressing for a romantic date? अरे ये देखो आपके सामने इतना इतनी अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने। ये तो romantic आप date के मजे लिए। मिला ना. नहीं but हाँ. You. Yeah, I think सभी अच्छा बन के जाएंगे यार डेट पे. Yeah, जाने. let's put Depends this special emphasis depends on on who the date is। Yeah, Yeah. how वो भी well है. do you want the date? कितना how long एफर्ट have you मारने का been dating? मोटिवेशन आ रहा है। And कितना देर उस डेट पे रहना भी है, that is also करेक्ट। हाँ How वही well do you मोटिवेशन। want the date to go? कहाँ पहुँचना है? मोटिवेशन कहाँ कितनी है पहुंचना है आपको? उसके साथ, हाँ, that's the ultimate okay, who gets the most number of crush DMs on Instagram कि you know sir मेरे crush हो, मैम आप मेरे crush हो, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक हमने कंपेयर तो नहीं किया है Compare तो नहीं किया है। नोट्स। एक बार DMs खोल के चेक करो in general, I think think सब बाबा नहीं बिल्कुल अपना अपना तो कर ही काफी। रहे हैं हम लोग, चेक एक दूसरे का चेक नहीं कर हाँ, रहे। एक दूसरे का अपने नहीं तो करते हैं. अपने कर रहे हो। Okay, who's an absolute lalla of family in general? I think वो उसने पहले ही बता she's दिया। already given the answer. ये दोनों they're both older siblings ना in their respective families. Yeah. तो हमें चीजें बांटनी पड़ती है, देनी पड़ती है। Everything, हाँ, just because you have to divide. Who's most likely to laugh during a serious situation? ये मतलब मुझे छोड़ के कोई भी आंसर हो सकता है। हाँ, Actually, हाँ. actually नहीं, even Sumeet laughs a Even lot. I laugh. Yeah. मतलब हाँ, Serious situations. हाँ, मतलब सीन में, में Scene सीरियस में. Scenes में नहीं, I'm talking about like Life a में. place where you're not supposed to laugh but you end up laughing. I
It happens to me. हमें ही Too को often. Too often. Too often. Way than too I like. often. Yeah. Way too often. More often than I would like. Yeah. So last question before I let you guys go. Who's most likely to cry and get more emotional on last day of shoot? कोई भी नहीं है. Last day of shoot तो नहीं है, but we might get like in the middle we might get. Senti. But थोड़ा बहुत लगता है ना अगला सीजन भी आ रहा है तो चलो यार रोना धोना हटाओ. You can just be smiles and नहीं, but Also, generally this set चलो you मतलब feel कि any other ये set तो अपने ही लोग मतलब हाँ मतलब we can वर्सोवा में ही रहते हैं सब वर्सोवा में लोग। रहते हैं। मिल लेंगे। अगर अपने आप में बहुत trip- मिस हाँ। किया तो we'll just अपने आप में like, ट्रिपलिंग ड्यूटी. कोई ऐसे सेट पे भी चले जाते हो पे आप जहाँ पहले दिन दूसरे दिन ही आपको रोना आता है कि अभी 30 दिन और रहना है यहाँ पे। That is the reverse. 28 वहाँ पे काउंटडाउन शुरू होता है काउंटडाउन शुरू होता है. Day 28, 27, 26 ऐसे करके नीचे होता है. But I'm pretty sure that's not the case with you guys. because you Not guys here, have a lot not of here. fun. Not here. On screen तो दिखता ही है, off screen भी होता है. I'm pretty sure. Wish you guys all the best for tripling Thank season 3. you. Thank you so Thank much you. for giving us your valuable time on the Bollywood Talk Show on IWMBuzz. Always a pleasure. Thank May you get many awards, many 3x है तो triple धमाल, triple awards, triple सब कुछ recognition है आप सबके लिए. All the best, lots of love. Thank you. Thank you so much. That's a wrap on the Bollywood Talk Show today on IWMBuzz. We'll see you again with another interesting episode very soon. Thank you so much. God bless.